Good morning children. Today in this video I'll tell you about what is Microsoft Word, what are the different components of a Microsoft Word window and how to start this Microsoft Word. Clear? Children, Microsoft Word is an application software. As I already told you in the previous lectures that we have got two types of softwares. First one is application software and second one is system software. And this Microsoft Word comes in the category of application software. Clear? After that, now what is this Microsoft Word? What it is used for? Clear? Children, Microsoft Word is a word processing program. Microsoft Word is a word processing program. What does it mean? What does the word processor mean? Clear? Word processor is actually a program that is used for typing text, or we can write letters, we can write reports in a word processor. Clear? And this Microsoft Word is an example of the Microsoft Word processor. So you should remember that Microsoft Word is a word processing program. ये एक word processing program है. और word processing program होता क्या है? It's a program that helps us to write letters, reports or even any other text beautifully in a document. क्लियर? तो ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें किस में मदद करता है कि हाँ, अगर हमें टेक्स्ट को टाइप करना है उसमें हमें ये मदद करता है. क्लियर? और इसकी एग्जाम्पल क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या है? इसमें एक बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एंड वी हैव गॉट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन आवर सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर. So I hope that you got the idea of what a word processor is. Children, word processor is nothing. It's a program that helps us to write letters and reports beautifully. And example of this word processor is Microsoft Word. There are so many word processing programs and Microsoft Word is one of the examples. Now we will discuss about what is Microsoft Word. Children, Microsoft Word, as the name suggests, it is developed by the Microsoft company. Clear? ये Microsoft Word जो है किसने बनाया? Microsoft ने बनाया है, एक कंपनी है उसने बनाया है. And what it is used for? Children, Microsoft Word is used for writing letters, reports or any form of text in a document. Clear? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज यूज फॉर राइटिंग टेक्स्ट. क्लियर? और टाइपिंग टेक्स्ट. सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट इज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो आपने याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं. ठीक है? After that, I'll tell you about how to start the Microsoft Word. Clear? So I'll be closing all this. Clear? After that, I'll tell you the steps. I'll show you the practical demonstration of how to open this Microsoft Word. So first step you need to do is to click on the start button that is over here. Click on the start button. After that you will get this type of screen. Just type from the keyboard WORD and you will get the Microsoft Word on your computer screen, and click on the Microsoft Word, or we can say Word 2013 is here, and in your syllabus it is Word 2010. So there is nothing much difference, but the basic thing is that both are used for typing text. So I'll repeat again the steps. So first step is to click on the start button. After that, type the word. Type from the keyboard Word. Clear? You will get a Microsoft Word over here, and once clicking on this you will get a screen, and from that you will have to click on the blank document. Blank document means fresh document, nothing is written over there. So this way you can open the Microsoft Word, or you can use one more way to open the Microsoft Word is click on start button. I'll tell you the steps. Click on start button, then click all programs, then Microsoft Office,
than Microsoft Word. And after following all those steps, you will get this type of screen on your computer system. Now we will discuss about the different word components. Children, जैसे आपने Microsoft Word ओपन किया अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो आपके पास ऐसा वाला स्क्रीन आ जाएगा. क्लियर? आफ्टर दैट ये स्क्रीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स एज यू आर एबल टू सी ओवर हेयर. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइटल बार. चिल्ड्रन, टाइटल बार क्या होता है? ये जो आप ऊपर टॉप पे दिख रहे हो, टॉप मोस्ट बार जो होता है, दैट इज कॉल्ड द टाइटल बार. द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट. ये टाइटल बार जो होता है ये टॉप पे होता है. ये कैसा बार होता है? स्मॉल एरिया होता है यहाँ पे. ये देखो जो ऊपर आपको नजर आ रहा है टॉप मोस्ट बार, इससे हम टाइटल बार कहते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइटल बार? इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट. ये टाइटल बार जो होता है ये डिस्प्ले करता है हमें क्या? जो हमारा ओपन डॉक्यूमेंट है उसका नाम बताता है. क्लियर? अभी जो इस डॉक्यूमेंट का नाम है वो है डॉक्यूमेंट 1 and this document 1 is the name of the document and it is displayed on the title bar. Clear? It is displayed on the title bar. After that we have got the file tab. Children, file tab is nothing, as you are able to see there are different text written over here like file, home, insert, design, page layout. These all we call as tabs, and one of them is file tab. Children, file tab is the tab. Once you click on the file tab, you will get a different options related to the file like new, open, save as, print, share, like all these things. With the help of new button, if you click on new, you will get a blank document. New document. Open means if you have already created any one of the document on your computer screen in Microsoft Word, you can open that. After that you can save the document, print the document, share the document. These all things you will get once clicking on the file tab. तो फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फाइल के रिलेटेड, वो आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार. चिल्ड्रन, क्विक एक्सेस टूल बार इज दिस. These 3 commands. One is save, this is undo, and this one is redo. Clear? So we have got in quick access toolbar, we have got save, then undo, after that redo. These 3 commands we have got in quick access toolbar. Clear? These 3 commands we have got in quick access toolbar. So what is the function of the save? Save function, save button is used for saving the document. Save करने के लिए use होता है. Undo function is used to reverse the previous action. For example, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा. For example, my name is Samar. मैंने कुछ नाम लिखा है यहाँ पे. Now I want to undo it. I want to reverse this action, whatever I have written. So I'll be clicking on this undo. Once I click on undo, this all will get erased over. Previous action जो मैंने किया था, मैंने लिखा था my name is Samar. तो मैंने undo पे क्लिक करने से क्या हुआ? वो reverse हो गया, मतलब वो हट गया. अभी अगर मैं चाहता हूँ if I want it again on my screen, I have to click on the redo. See, once clicking on the redo, I'll get the back. It will do the reverse function of undo. Clear? After that is ribbon. Ribbon, children, is nothing. It is the group of related commands. Children, as you are able to see over here, the font, different types of font styles are there, like you can see. While clicking on this font drop down, you will get number of font styles. After that you will get font size, then bold, italic, underline. That means these all commands are related to the font. So they have been grouped together and they form a ribbon that we call as a font ribbon. इससे हम font ribbon कहते हैं. यहाँ से यहाँ तक जितनी भी कमांड्स हैं उनको ग्रुप किया गया है, वो किसके रिलेटेड है? फॉन्ट के रिलेटेड है, उससे हम फॉन्ट रिबन कहते हैं. सिमिलरली यू विल गेट दीज कमांड्स. ये जहाँ पे देखो, यहाँ पे अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, या लाइन स्पेसिंग है, या बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हो. सो दीज ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू अ पैराग्राफ, दे आर combined together, grouped together, and they form a ribbon that is called a paragraph ribbon. So these all things, that is these
what actually ribbon is basically the group of related commands. ये जो आप यहाँ